start with the polls. So thank you for logging back. Yes, Aksh, I totally agree. Just tell me when y'all are ready. Ready, everyone? So we can check off whatever you remember in the last lecture. So I'm going to start off. The poll will come. I'm launching the first one. Thank you, Rachel. I've made the change in the settings. Yeah. Mm. Now, this is such an easy question. Don't you agree? 45 seconds is more than enough for this question. What do you think the class will answer correctly? What do you guys think? Class answer करेगा? क्या लगता है आपको? आपको क्लास पे विश्वास है? है, करेगा? I like the confidence you have in your class, isn't it? Let's see. Class देखते हैं. I'm ending the poll now. It's exact 1 minute and I'm sharing the result. So very good. So there is still that 5 people. Mastikor, some 9 people who have made the mistake, but rest 90%. Pehli baar aaya 90%. So you can say that because it's very easy. Absolutely. I agree. I really want the whole class to get 100 on every question if you ask me. Yeah. So let's see. So everyone agrees candela is the unit of luminous intensity. Going for the next question. I hope all the questions you're able to do. Next question. Click on the option, hit the submit button. Let's see. Now, this is so simple, isn't it? How can people make a mistake in this as well? Come on, guys. I'm going to give only 30 seconds. Not avocado. It's Avogadro. What is this? You had avocados this morning on breakfast? It's not avocado. It's Avogadros. Yeah. Darshan, I like that you have. Exactly. Aditya sending me fruits. Aditya, come on. Exactly, Kaustubh. Yeah. So I'm going to end the poll and let's see. See, it's the same naughty 8, 9, 10, 11 people. Rest, everybody has said option A. Yeah. Still, Fennel, we still don't have 90%. Okay. Okay. So I hope you can see. Yeah. What was its value? 6.023 into 10 to the power 23. Brilliant. Let's see the third question. So I always give good questions, simple questions. Now you have to identify which is incorrect. We had done conventions yesterday. So which is incorrect? Ayush, they are not naughty. They are notorious. Okay, there's a difference. I hope you will be able to come to the right answer. Come on, guys. You got another exact. I've timed it to exactly 45 seconds. I want the right answer.
Come on, at least कभी तो 100% आए यार, कभी तो. It's time to 45 seconds, so it will close on its own. Yep, the poll is done, and let me share the results with you. Which is incorrect? If you remember, हमने कहा था कि क्या है incorrect यहाँ पे, हम आधा पूरा नाम और आधा symbol नहीं रख सकते, right? If you remember, we can't do like half of symbol and half of this we cannot do. So I hope you remember that, right? Okay. Next question. Are you guys ready? कभी तो 100% दो यार. चलो. Which is the correct representation? इसमें से कौन सा correct representation है? कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है. Come on guys, give me 100% sometime. So which is the correct way to represent? Is 50 kilos correct, 20 newtons correct, or 30 Newton correct? $35 seconds. 80 people have already answered. 20 lazy people are still thinking. Come on, guys, fast. It should be like super fast. What are you WhatsApping each other about the answer? What is this? Why is it taking so much time? मुझे लग रहा है एक अलग सा ग्रुप ही होगा WhatsApp में. Test helping group. Test help group. THG. I'm 100% sure about it. So I'm going to end the bowl. Yeah. And let's see, let's share the results. What do you think? Still 88%. I can't believe this. We spoke yesterday that plural में कभी नहीं बोलते. Everything is always in singular form. Yes, so Yash is taking my idea. Yash, no WhatsApp groups. Okay for that. Yeah. So now this was very easy. Still 88%. 90% की कब ऊपर आएगा पता नहीं. Now let's go to the next question and see who will answer this. So it's one of the conventions. So if m, small m, is the unit and not the prefix, मतलब milli नहीं है यहाँ पे, it's a unit, then we must. So there are two options here, whether we must use a hyphen or space between or we must not use. So let me see. So here there is a takkar because people are getting a little confused here. Because meter or milli. So I wonder who's going to give me the right answer. Okay, there's a close fight going on. 45 seconds nearing. 75 people have answered. Come on, guys. I don't know when will we ever get. I think I was very clear yesterday. याद है तुमको एक hyphen डाला था. Okay, the time limit is done and I'm sharing the results. I don't know what to say. 60% of the class says it is option A and 40% of the class is saying it's option B, which is correct. Who's going to tell me which one is correct? Can you raise your hand? Anyone? Okay, Satyendra ka haath already upar hai. Satyendra, yes, tell me. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Yes, good evening, Satyendra. What is the right answer? We have to introduce a space or a hyphen between the. Yes, yes. Thank you so much. So we have to introduce a space or a hyphen between if both are units. अगर दोनों यूनिट है, तभी हमें हाइफन या स्पेस डालना ही है. और अगर प्रीफिक्स है मतलब मिली है तो नहीं डालना है. Is that clear? So I hope everyone will remember this. Yes, ma'am. Yeah, thank you, Satyendra. So we're going to the next question and let's see who remembers this. Very simple. Derived units are a combination of fundamental units. Is this true or false? I'm not going to say anything now. Krisha, what do you think? Huh? You think your class will get about 90% this time? Kaustubh Pansania, you have solid confidence in your class. You say 100%. Let's see.
Kunal has given a verdict. 95% जनता सही बोलेगी. तेजस को लगता है 100. Sneha is saying this was the easiest. Manaswi is saying 90% above. We are coming to 45 seconds. Fenil is saying 80 होगा. Krisha is saying 101%. भाई 90 क्रॉस नहीं हो रहा इधर. Ramesh, Sadhana, everyone is super confident. I'm ending the poll and let's share the results. My class, my dear class, derived units are obviously a combination of fundamental units. Fundamental में तो 7 ही हैं. उनको combine करेंगे तो बनेगा derived. Sadhana is saying धोखा, class का धोखा. Yeah, absolutely. So let's step into the next question and see whether the class gives the right answer. Janta Janardhan. The supplementary units are. अभी इससे easy सवाल तो, I don't know how to ask easier than this. Absolutely. Yes, 10 seconds more. वही तो पेपर अगर इजी सेट करेंगे तो भी लोगों को मतलब फुल मार्क्स नहीं आएगा तो क्या जबरदस्ती हो. Okay, 47 seconds. There are 16 people in your class who find it's not correct, but the rest of the class agrees. 83% of the class agrees radian and steradian. क्या होगा कल के पेपर में? Now this is very simple, okay? I've been telling you this lecture, last lecture, all lectures. 10 to the power minus 15 is 10 to the power minus 15 is. So there are these naughty children, even if they know the answer, they just want to click something. They just like the idea of clicking that and putting a submit button. That's how these mobile phones and technology, it's just the touch screen. किसी ने पहली बार टच स्क्रीन लिया रहेगा, उसको बड़ा मजा आ रहा है. 10 to the power minus 15 guys, very easy. इससे easy तो कुछ हो ही नहीं सकता. Absolutely 80% of the class. Oh, come on guys. When will I see the 100%? So, वो chat box चिल्ला के आंसर बोल रही है. Chat box. I wish you all could see the chat box. There is a fantastic activity going on in the chat box. Let's share the result again. 80% of the class. 20% जो है बहुत ही notorious लोग हैं. हाँ. It's on record. I have another word also. Otherwise, I have another word also. So 20% of the class जबरदस्ती गलती कर रहे हैं because everyone knows it is femto. Femto is 10 to the power minus 15. Okay, let's go for the last question now. This is the last question. Please be careful when you answer this one. Now this is the last, it's like the 7th point. वो convention का 7th point. Correct कुणाल, कभी नहीं आने वाला है. इन लोग को मस्ती सूझ रही है तो ये लोग कभी करेक्ट आंसर नहीं करने वाले. But at least majority must give the right answer. That's the target. 5 seconds more. Come on, it's just a matter of clicking the button and hit the submit. Yeah, Rachel, on the positive note, I totally agree with you, beta. Okay, I'm going to end the poll and let's share the result. And I'm sharing the result. You can see that 73% of the class says it is true. याद है आपको, अगर हमें say for example 10 to the power minus 6 लिखना है, so will we write 10 raised to minus 3 into 10 raised to minus 3? Why would we write that? क्या हम ऐसा लिखेंगे milli second?
थोड़ी ना लिखेंगे, मिली मिली तो माइक्रो है, राइट? सो द मीनिंग इज यूज ऑफ डबल प्रिफिक्सेस हम अवॉइड करते हैं। अगर हमारे पास ऑलरेडी माइक्रो है तो हम क्यों लिखेंगे मिली मिली? तो डबल बार प्रिफिक्सेस हम यूज नहीं करेंगे। Okay, that's okay, but I hope you learned something from this because that's the agenda of polls. So I hope you enjoyed today's polls. Getting back to our, okay. So this I'll skip a little because it's not required. You can just refer to it. What is acre, what is hectare, and what is barn. This is not required right now. It's not there in the textbook. So I'm going to go to the practical units of mass because I need to complete something today. Practical units of mass बहुत ही simple है. When I say 1 metric ton, when I say 1 metric ton, मतलब 1000 kg, याद रहेगा? इसलिए आपको एक picture दिया है, you know, steel rods and things like that. Yeah, Rachel, I totally agree, beta. So steel bars is there. So steel bars. So metric tons when we are talking about 50 metric ton. तो तुम्हारे दिमाग में जाना चाहिए, तुमको तो सिर्फ केजी पता है यार. तो मेट्रिक टन बोला तो 1000 केजी, मेट्रिक टन बोला तो 1000 केजी. नेक्स्ट क्या है? क्विंटल. वो देखा है अपने ग्रोसरी वाले के पास, यू नो, द गाय हु सेल्स ऑल द, जो बनिया होता है उनके पास जो होते हैं वो थोड़े ना 1 किलो खरीदते होंगे. व्हेन यू गो टू सुपरमार्केट्स एंड ऑल, बैक साइड दे हैव ऑल द सैक्स. सो 1 क्विंटल इज 100 kg. So he will be purchasing in quintal. वो केजी नहीं बोलता है, वो बोलता है मुझे 50 क्विंटल चाहिए, you know, या मुझे 10 क्विंटल चाहिए. So when he says 10 quintals, it means it is 1000 kg because 1 quintal is 100 kg. याद रहेगा? 1 quintal 100 kg. So I'm going to go to all this and somebody has to unmute and say everything. Okay, done? Deal. नहीं तो याद कैसे रहेगा? आज ही याद कर लो ना. 1 metric ton is 1000 kg. 1 quintal is 100 kg. Write it now only. अभी यहीं पे लिख लो आप. Practical units of mass करके टाइटल दे दो. 1 metric ton मतलब 1000 kg होता है. Example steel rods. The picture is only to, you know, remember. Diagram कोई ना बनाना है. 1 quintal is 100 kg. अच्छा, you are, yeah, very good, Fennel. You brought about the relation between the, yes, absolutely. So हम लोग क्या कर रहे हैं ना Fennel, अभी हम लोग confusion नहीं चाहते, इसलिए just keeping it on kg on the right hand side. फिर तो आप कुछ भी इधर का इधर कन्वर्ट कर लो, एक बार पता है तो क्यों ना करें, बराबर. It's a good try, good one. Written, guys. So सबको दिमाग में गया 1 metric ton क्या होता है? Everyone has finished 1 metric ton and 1 quintal. Completed? Okay. So I hope you remember. 1 metric ton हो गया, 1 quintal registered in memory. Okay. जब, you know, babies, we always say pounds. So how much is 1 pound? See, this is a complicated value, you know, 0.454 kg. 0.454 kg. याद रहेगा? 0.454 kg को हम 1 pound कहते हैं. And we have 1 slug. Slug is basically, you know, we just cut grains together, you know, in the farms, and they cut and they, you know, बांध देते हैं into 1 stack, and that 1 stack is around 14.59 kg, जिसको वो 1 slug कहते हैं. So these are just practical units, you know. वो लोग क्या use करते हैं? वो लोग slug use करते हैं, pound use करते हैं, you know, metric ton use करते हैं. So you should know what they are using practically. So this is only some things that are mentioned in the book which I expect you to know. 1 pound, 1 slug. So I'm only doing the main ones today. I don't want you to get confused. Is it over? 1 pound, 1 slug. सबको याद हो गया? 1 pound 0.454 kg and 1 slug is 14.59 kg.
Written. We always say na bacha, pound is a unit of kg only, Priyanka. पर जब बच्चों को उठाते ना, like आप डॉक्टर को पूछे कितना है ना, what's the weight of the baby, he will say 3 pounds. He will say, you know, 2.5 pounds. He will say 5 pounds. So तभी वो लोग जो use करते हैं वो लोग kg में नहीं बोलते. They'll tell you in pounds. So these are practical units का मतलब है जो हम day to day life में use करते हैं. So everything, everyone doesn't talk in terms of kg. Okay? Alia, paper discuss nahi hoga. I think I was very clear. I will not discuss what's going to come in the paper tomorrow. अगर आप मुझसे वो expect करते हैं, in my 16 years of experience, taking out the questions from my mouth is impossible. Okay, so I will only do what needs to be done. Trust me on that. So now, what is one Chandrasekhar limit? ये mass का सबसे बड़ा practical unit है. You must have heard about the black holes, you know. So when we talk about black holes in space, something to measure mass. So basically one Chandrasekhar limit is 1.4 into the mass of the sun. 1.4 into the mass of the sun. So just remember, one Chandrasekhar limit is the largest practical unit for measuring mass. ये सबको detail में पढ़ना जरूरी नहीं है. You should just know कि one Chandrasekhar limit मतलब practically जो सबसे largest unit mass का measure होता है is not kg. It is called one Chandrasekhar limit. Sometimes they call it a CL. So it is nothing but 1.4 into the mass of the sun. Yes, Abhinav, correct. Yes. Yes, yes, correct. Yes, yes, absolutely correct. ठीक है? Yeah, I have given, right? Yeah. Yes, Sunny, you have attended the previous lecture, that means. Yeah, I can see that. Yeah. So one Chandrasekhar limit, guys, please write it down. So those who are interested to write that value, you can write it as mass of the sun is 1.989 into 10 to the power 30. So ye mass of the sun hai, because it is 1.4 times the mass of the sun. So jisko likhna hai wo likh sakta hai. जिसको लिखना है वो लिख सकता है 1.989 into 10 to the power 30 kg is the mass of the sun. So it is one of the practical units. अब सब कौन बताएगा मुझे लाइन में? Anyone who can tell me everything? So the bigger units का कौन बताने वाला है? Priyanka Tripathi. Yes, Priyanka, tell me. Priyanka, unmute करना है. जल्दी बताओ. Priyanka is not unmuting. Who else will do? Sadhana, आप करोगे? Sadhana. What's happening to the girls today? Okay, I'm putting here. Okay, yeah, here. Tell me all of it. 1 metric ton is equal to 1000 kg. Yes. 1 quintal is equal to 1000 kg. Yes. 1 pound is equal to 0.454 kg. Okay. 1 slug is equal to 14.59 kg. Okay. And 1 Chandrasekhar limit is equal to 2.785 into 10 raised to 30 kg. 2 point. You want to take a look at it? It's 2.785 into 10 to the power 30 kg. That is Chandrasekhar limit. I think both the answers you said 1000 here. I have a doubt in the first two that you said. No, miss. 1 quintal is? 1 quintal is 100 kg. 1 quintal is 100 kg. Yes. Thank you. Thank you. Yeah. So those were the units of mass, right? Anybody who is going to remember all the units of length?
देखते हैं किसमें है दम. Anyone who remembers all the practical units of length? Okay, so I have Manasvi. Manasvi, would you try to try? Yes, miss. Yeah. Bacteria is equal to 1 micron, Hmm. and 1 micron is equal to 10 raised to minus 6 meter. Yes. Molecules is equal to 1 nanometer. Hmm. 1 nanometer is 10 raised to minus 9 meter. Hmm. Atoms is 1 angstrom, and 1 angstrom is 10 raised to minus 10 meter. Yes. And nucleus is 1 Fermi, which is equal to 10 raised to minus 15 meters. Yes. After that? And one astronomical unit is equal to 1.5 into 10 raised to 11 meters. Very good. After astronomical unit is light year. How much is 1 light year? One light year is equal to 9.5 into 10 raised to 15 meter. Which is the largest unit of length? Largest unit is largest unit is parsec. Yes. 1 parsec. How much is 1 parsec? 1 parsec is equal to 3.1 into 10 raised to 3.1 into 10 raised to 16 meters. Excellent. Excellent. Thank you so much. Great, Manasvi there. So she has given us the entire thing of length as well. So you have learned all the units of length and you've learned all the units of mass. So that's fantastic, isn't it? So within a small amount of time, you have learned it. That's enough. Now just look at AMU, छोटा unit of mass. अभी तो हम लोग सब बड़ा units देख रहे थे, right? छोटा unit of mass. You must have come across this in chemistry. या आप पढ़ेंगे उसको. जब हम लोग mass of atoms या protons या neutrons, तो the smallest practical unit of mass, largest तो आपको पता है, चंद्रशेखर limit. Smallest practical unit of mass अगर बात किया जाए तो we always talk in atomic mass unit, AMU. Some people write it as only U, some people write it as AU, or some people write it as AMU. So atomic mass unit, AMU, basically we write it as. So 1 atomic mass unit is 1/12 of the mass of a single atom. That comes to 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. Please write only that much down. These two lines. 1 atomic mass unit is 1.66 into 10 raised to minus 27 kg. And that it is the smallest practical unit for measuring mass. Yes, very good, Krisha. Yes. So it is 1 atomic mass unit, which is 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. Fatafat wo 2 point likh do. Yes, I can see Krisha and Satendra remembering Dalton's theory. So you're remembering chemistry. Just 2 lines likhna hai. Yeah, Sadhna has finished writing. So I normally upload everything on my channel also. So you can follow my YouTube channel as well. I'll send you the link in some time. So I normally upload there as well. So if you want me to open it, it's normally kept in hidden this thing. So in case you want to access it on the YouTube and it's comfortable for you, I can open up the lectures there as well. Whatever, as long as you want to study, I'm here for you. Just tell me if you've completed those two. Please complete it quickly. Is it completed, guys? Yeah, so I have just put my profile for you to follow. If you want to follow,
you can follow me on my profile. Completed, everybody? Okay. So now let's come to quickly the practical units of time. So out of these practical units of time, because then we are starting with dimensions, practical units of time में 1 solar day, ये तो सबको पता ही है, 1 solar day. एक solar day मतलब 24 hours होता है. So solar day, everybody knows, 1 solar day is nothing but the rotation of the earth. So it is 24 hours. Sometimes we have something called as 1 sidereal day. Due to the change in seasons, we have a slight variation. So 1 sidereal day is nothing but 23 hours and 56 minutes. I just want you to remember what is 1 solar day. 24 hours, 1 sidereal day is 23 hours and 56 minutes. What is 1 solar year? 365 solar days, isn't it? When you say you're 18 years, next time आप क्या बोलोगे? I took 18 revolutions around the sun. Wouldn't that look fantastic? Yes or no? आप कितने साल के हो? Around 15, 16 years? 15 years you all must be, right? So आप क्या बोलोगे? I have to give 15 revolutions around the sun. Okay, you guys are 16 now. So I've taken 16 revolutions around the sun. Style में बोलने का, physics student है भाई. Now you're a physics student. थोड़ा style change करके बोलने का. We are taking 16 revolutions around the sun of 16 solar years. 16 solar years because 1 solar year is 365 solar days. 1 lunar month. Anybody knows the meaning of lunar? I'm sure many of you know what is lunar. Lunar is according to the moon. Very good, Tejas, Tarun, Aditya, Kaustubh. It is according to the moon. So 1 lunar month, when we calculate according to the moon, taking full moon से वापस full moon जब तक आता है, एक full moon से फिर वो वापस जब full moon आता है, अमावस्या होकर फिर वापस आएगा full moon की तरफ, तब हम कहते हैं it is 27.3 solar days. So 1 solar day is 24 hours. एक sidereal day is थोड़ा सा कम, 23 hours and 56 minutes. 1 solar year is 365 solar days. 1 lunar month is 27.3 solar days. And 1 shake, we never use this, but this is a very, very small unit of time, which is 10 to the power minus 8 seconds. So this is just to give you a rough idea. So 1 shake is 10 to the power minus 8 seconds. Just write it down quickly, guys. Abhinav, पूरा चांद आता है ना, पूर्णिमा. पूर्णिमा मतलब full moon. है कि नहीं? फिर वापस जब full moon आता है, it doesn't come exactly in 1 month, beta. It takes slightly more. It takes slightly more number of days. That's why I've written 27.3 solar days. Yes, Saksh. Science students का power. मुझे कल देखना है टेस्ट में power. अक्ष, सोनी, मेरे को कल देखना है. हाँ, मैं फोन करके कांदिवली फोन करके पूछूंगी कि अक्ष को कितना आया. Completed, guys? Yes, Kaustubh, हमेशा. इतना तो ट्रस्ट रखो बेटा. So now we are going to come to a very new topic. I hope everyone is done. Please give the heading as dimensions. Please give the heading as dimensions. Dimensions heading दे दो. आयुष, जितना आपसे होता है, देखो पेपर अटेम्प्ट करने का, मार्क्स के बारे में सोचने का नहीं. सी जो न्यू स्टूडेंट्स है ना, जाके पेपर दे तो दो, डरने का नहीं. रूल नंबर 1, मैंने आपको रात को भी उठा के पेपर दिया तो भी आप करने को तैयार रहना चाहिए. रूल नंबर 1, नेवर स्किप अ सिंगल टेस्ट. कम पढ़ा है, ज्यादा पढ़ा है, that's not a question at all. Okay, the point is मैंने कुछ तो पढ़ा.
द पॉइंट इज मैंने कुछ तो पढ़ा, मुझे टेस्ट स्किप नहीं करना चाहिए, समझ रहे? जितना हो रहा है, मैंने 5 मार्क का पढ़ा तो मेरे को 5 मार्क मिला, सिंपल रूल है कि नहीं? थोड़ा ना सबको फुल मार्क्स आता है, इट्स ओके, सो व्हाट, यू नो, आई स्टडीड फॉर 5 मार्क्स, आई गॉट फुल मार्क्स। कोई पूछता है तेरे को 5 आउट ऑफ 10 आया, हाँ, तो मेरे हिसाब से तो फुल मार्क्स ही है क्योंकि मैंने 5 ही मार्क पढ़ा था। सो आई होप everyone just go and write the test, trust me on this, come on guys, you can trust me. So the next lecture you'll be, you know, screaming your marks on the chat box, trust me on that. So I know what I'm telling my students because you should have faith in me. Now let's come to dimensions. Very, very simple. Now we finished all the theory and lots of theory and lots of numbers to remember. Let's come to fundamental quantities and dimensions. My God, तुम लोग कितना ज्ञान दे रहे हो चैट बॉक्स में। फेल का मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। हे भगवान, कुछ ना बने तो संदीप महेश्वरी बन जाओगे यार। इतना सारा क्या डर रहा, डर नहीं रहा अब। काफी इंटरेस्टिंग, आई कैन सी अ लॉट ऑफ यू नो मोटिवेशनल स्पीकर्स इन द चैट बॉक्स। सो लेट्स कम बैक। लेंथ को देखो कैसे लिखना चाहिए। ज्ञान, आई नो ज्ञान तो तुम्हारे पास काफी रहता है। लेंथ को देखो कैसे लिखना चाहिए। स्क्वायर ब्रैकेट लेना है, स्क्वायर ब्रैकेट लेना है और उसके अंदर एल लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज मास। मास को कैसे लिखना है? स्क्वायर ब्रैकेट लेना है और कैपिटल एम लिखना है। नेक्स्ट क्या है? टाइम। टाइम को कैसे लिखना है? स्क्वायर ब्रैकेट लिख के टी लिखना है। नेक्स्ट क्या लिखना है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को कैसे लिखना है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर के लिखना है। हाँ, सब कैपिटल लेटर। यस दर्शन, कैपिटल एल, कैपिटल एम, कैपिटल टी। एम्पियर को लिखते टाइम कैपिटल ए। सो ये कुछ सीखने वाले हैं, अभी पता चलेगा ये कहाँ यूज हो रहा है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए कैपिटल एन और लुमिनस इंटेंसिटी के लिए जे। यस, एम्पियर को आप आई भी लिख सकते हैं, मोस्टली वी यूज आई ओनली फॉर एम्पियर। इसमें से सबसे ज्यादा यूज होगा एल एम टी और करंट। ये चारों हम सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं। ये सबसे ज्यादा हम यूज करने वाले हैं, एल एम टी और आई, ये सबसे ज्यादा हम यूज करने वाला है। लेंथ, मास, टी, के और आई। क्विकली हो गया लिख के। लेंथ को कैपिटल एल, मास को कैपिटल एम, टाइम को टी, टेम्परेचर को के, करंट को ए और आई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन और लुमिनस इंटेंसिटी जे। इसमें हम लोग चारों यूज करने वाले हैं। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट इवन, यू नो, आई हैव नेवर यूज्ड ऑल दिस टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस। वी आर जस्ट गोइंग टू यूज 4: लेंथ, मास, टाइम, करंट। इतना तो याद ही कर सकते हैं ना। लेंथ, मास, टाइम, करंट। LMTI, कुछ लोग MLTI बोलते हैं, कुछ लोग LMTI बोलते हैं, जो तुमको याद रहे। डन। ब्रैकेट में लिखते हैं। सो लेट्स सी व्हाट एम आई सेइंग। ये ब्रैकेट ब्रैकेट क्या चल रहा है देखते हैं। रेडी? सो दिस इज द डेफिनेशन, यू नो। सो वी विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन। पहले कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। So let's see what are the examples, okay? So the first example I'm going to take is velocity. So suppose I say कि velocity का dimension लिखो, तो पहले आपको क्या सोचना है कि velocity का भाई formula क्या है? What is velocity? Do you agree it is displacement? Displacement मतलब distance ही है upon time. That means do all of you agree this is going to be meter per second? अब इसका मुझे डायमेंशन लिखना है। सो सी हाउ आई राइट द डायमेंशन। जिनको नहीं आता है वो यहाँ ध्यान दे। ब्रैकेट खोलने का, एल लिखने का, एम लिखने का, टी लिखने का और आई लिखने का। बहुत सिंपल है। देखो, एल मतलब क्या होता है? लेंथ। इधर लेंथ का कितना पावर है? 1, सो दिस विल बी 1। मास है क्या यहाँ पर? मास तो दिख ही नहीं रहा है भाई, तो मास 0। टाइम है, हाँ है ना, ये नीचे है, ये जब ऊपर जाएगा कैन आई राइट इट एज m(s⁻⁻1)? सो दिस इज -1, सो आई विल राइट टाइम एज -1। करंट तो दिख ही नहीं रहा है फॉर्मूला में, तो 0। एनी डाउट इन दिस गाइस? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस?
अरे बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल तो कुछ है ही नहीं। क्या करना है, पहले जो मैं पूछती हूँ उसका फॉर्मूला लिखना है, फिर उसका यूनिट लिखना है और काउंट करना है उसमें लेंथ कितना, मास कितना, टाइम कितना, करंट कितना। Shall I give you another example? Ready for another example, guys? Okay, so let's take another example. ठीक है? Suppose force. चलो, force. Force का फॉर्मूला क्या है? सब लोग बताएंगे. Mass into acceleration. Now listen, okay? Mass क्या होता है? Mass is kg. Acceleration का यूनिट क्या होता है? Can I say it is meter per second square? Now you tell me how many L is there, how many M is there, T and I. तो ध्यान से देखो, पहले लेंथ को देखते हैं, कितना L है, उसका पावर 1 है, तो दिस इज 1. मास 1 kg इज देयर, सो 1. ये S नीचे है डिनोमिनेटर में, सो डिनोमिनेटर को जब हम न्यूमरेटर, एवरीथिंग हैज टू बी रिटन इन द न्यूमरेटर, सो व्हेन जो भी डिनोमिनेटर में है जब वो न्यूमरेटर में जाता है इट विल बिकम -2. करंट की बात ही नहीं हो रही है तो 0. Got it? So what you have to write? You have to write the formula, you have to write the unit and then count the power. Can you write these two examples? I'll give you more examples. I'll give you more examples. प्रियंका बेटा, ये देखो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो मीटर एक ही है ना प्रियंका, तो लेंथ एक ही है 1. मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, kg is the unit of mass, second is the unit of time and current is 0. Got it? Yes सतेंद्र, आप हमेशा LMTI को कंसिडर करें. yes, वो स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है. अच्छा, so can you I'll come to it Krisha, wait beta, I'm coming to it. So Krisha has a very Krisha Haria is asking me a very interesting doubt. She's asking me what will we write for candela. She's asking me what will we write for candela. कौन सोचेगा? What should we write for candela? नहीं, C तो कूलम होता है. C is कूलम, C नहीं लिख सकते. So बहुत interesting बात. Write it as important. Krisha, thank you for that question. Luminous intensity जिसको आप क्या कहते हैं, कैंडेला, जिसका यूनिट कैंडेला है, क्या इसको हम लोग लेंथ मास इसमें कुछ लिख सकते हैं? L M T I में कुछ लिख सकते हैं? आंसर इज नो. हेंस इट इज डायमेंशनलेस. क्या लिखना है? हेंस इट इज डायमेंशनलेस. इसका कोई डायमेंशन नहीं होता. इसका डायमेंशन लिखते नहीं सतेंद्र. I understood what you're taking it from the first table, but इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि वो लेंथ, मास, टाइम और टेम्परेचर में डिस्कस नहीं किया जाता. नहीं होता, नहीं होता, नहीं, कोई डायमेंशन नहीं होता. डायमेंशन हम सिर्फ LMT में लिखते हैं, LMTI में लिखते हैं. यस, वेरी गुड स्नेहा. स्नेहा का एक दूसरा पॉइंट है. शी सेज व्हाट अबाउट रेडियन एंड स्टेरेडियन. कौन बताएगा मुझे? रेडियन and steradian, yes, are also dimensionless. Are also dimensionless. Excellent. So if we say radian or we say steradian are also dimensionless. Okay, somebody has written a long message, but I can't read it. अक्ष बेटा, concentrate करो, हम आएंगे तुम्हारे point.
So radian and yes, please write these points down. Yes, please write the points down. Okay, Aditya has something to say. Yes, Aditya, amount of substance is also dimensionless. Amount of substance is also dimensionless. वो आप मैं I told you LMTNI उतना ही याद रखो, बाकी हम यूज नहीं करते. So if they are not defined by LMTNI, they are dimensionless. उसका कोई dimension नहीं होता. So even amount of substance is dimensionless. मैं 13 ऐसे आपको यूनिट बताऊंगी फिजिक्स में, 13 to 15 है जिनका डायमेंशन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता. Everyone has finished writing third and fourth. Everyone has finished writing third and fourth. नहीं, टेम्परेचर कंसिडर होगा. कौन पूछ रहा है? टेम्परेचर कंसिडर होगा. यू विल टेक इट एज केल्विन. टेम्परेचर कंसिडर होगा बिकॉज बहुत सारी चीजों में थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर आएगा. सो यू विल हैव टू टेक इट एज के. टेम्परेचर कंसिडर होगा, एंगल्स कंसिडर नहीं होंगे. जहां रेडियन आता है वहां सब आप डायमेंशनलेस बोलोगे. ओके, so let's get to the next fifth one. I hope you have completed this. Disha, you want 1 and 2? Please take a screenshot, beta, because the others have finished writing. Disha, take a screenshot. Please take a screenshot, Prachi. Screenshot. Yeah. Because others have finished, na? Fifth example. Ready, everyone? Fifth example ke liye. Let's take an example of pressure. Who will tell me pressure kya hota hai? Pressure hota hai force per unit area. Now, force का already हमने निकाला था in second one. What is it? It is L1 M1 T minus 2 I0. We have already removed, na? हम लोगों ने already remove किया है इसको. So what we will do here, I will directly write force. तो मुझे पता है L1 M1 T minus 2 I0. I will not write it again. Why should I write it again? Upon what is area? Area क्या होता है? Who will tell me? This is Newton per meter square. Meter square का मतलब I will just write L2 here. Is it okay? You can write M0 T0, but length तो square ही है ना. Now see how to write it. Okay, L देखो L. Can everyone look at the screen and tell me? L 2 है. देखो L numerator में 1 है और denominator में 2 है. So what I will do, the base is same, right? Both are L only. So I will write L 1 minus 2. Is this understood? उसको ऊपर लेके जाना है. M remains as it is, T remains as it is, I also remains as it is. So what is the final answer? Can I say it is L minus 1 M1 T minus 2 I0. Yeah, you can write it as MLT also. Yes, yes. Yes, yes, you can write it as M1 L. It depends on how you want to remember. So even this is correct, beta. If you remember it as M1 L minus 1 T minus 2, you want to write M first, no problem. You can write it in that manner also. So majority of the books you will see they write MLT format. वो लोग मास को पहले लिखते, फिर लेंथ को लिखते, फिर टाइम को लिखते, फिर करंट को लिखते. यस, दोनों पॉसिबल है. दिशा, दिशा बेटा ऊपर 1 है ना बेटा और नीचे 2 है. 2 को जब ऊपर लेके जाएंगे ना, देखो कॉमन है ना L L. All the L and M have to be coming together. So ये 2 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस लिखना है. So I did 1 minus 2. 1 minus 2 is minus 1. Got it, कुमकुम? एक और एग्जाम्पल देखते हैं. एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं. हाँ, एग्जाम में आप MLT लिखो. या एग्जाम में आप MLT लिखो. If they will not cut your marks, but if you want to write. अच्छा, anybody knows what is impulse? What is impulse? Anyone? Anyone who knows what is impulse? Okay, I can see a lot of hands up. Yes. Impulse, I'm writing it here only. Impulse is force multiplied by time.
अरे बहुत ही सिंपल है, फोर्स का तो हमें ऑलरेडी पता है. व्हाट इज फोर्स का? m1 l1 t-2 I0 फोर्स का है. इनटू टाइम का मतलब टाइम 1. नाउ सी मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पावर्स ऐड होते हैं ना. तो व्हाट शुड इट बी? m1 l1 t. t का क्या होगा? यहाँ का -2 will get added with यहाँ का 1. So it will become -1 and this will be I of 0. Is it fine? So this is the dimension of impulse. Impulse is force multiplied by time. Force into time, Abhinav, is impulse. I need a few minutes more. Can I take a few minutes more, guys? Just to explain to you one more thing. Huh? I just have to ask you something very simple. Okay, I have some questions. Impulse. Impulse matlab something that happens very quickly. So impulse depends completely on the time beta. Yeah, so I just have to finish one more point before we end the lecture today. See, whenever I talk about, dhyan se sunna is point ko, it may be helpful for tomorrow. Whenever I talk about energy, whenever I talk about work, when I say torque, when I say kinetic energy, when I say potential energy, you know, ये सारे क्या है? इन सबका यूनिट जूल है. इन सबका यूनिट क्या है? जूल है. एनर्जी जूल में है, वर्क जूल में है, टॉर्क जूल में है, काइनेटिक एनर्जी जूल में है, पोटेंशियल एनर्जी जूल में है, सब कुछ जूल में ही है. ये एसआई सिस्टम का कमाल है. एसआई सिस्टम में ना हमने क्या कर दिया, बहुत सारे, अभी एनर्जी बोला ना, तो ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, सब कुछ विल बी इन जूल. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? कैसा भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, एसआई सिस्टम डे इंटरनेशनल कहता है एक ही यूनिट रखो भाई. अभी जूल क्या होता है? जूल क्या होता है? इट इज नथिंग बट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इज जूल. आर यू अंडरस्टैंडिंग? व्हाट इज वर्क डन? इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? तो फोर्स का तो मुझे पता ही है, तो जूल का डायमेंशन कोई बताएगा मुझे? फोर्स क्या है? m1 l1 t-2 I0, ये तो फोर्स था. इनटू लेंथ, डिस्टेंस मतलब l1, यानी कि व्हाट इज योर जूल? इट इज m1 l2 t-2 I0. दिस इज द डायमेंशन फॉर एनर्जी. यानी कि आपको दिमाग में ये रखना है कि मोर देन वन क्वांटिटी कैन हैव सेम डायमेंशन. कैन यू प्लीज राइट इट डाउन? मोर देन वन क्वांटिटी कैन हैव. अच्छा, टॉर्क, सत्येंद्र, टॉर्क मतलब ये पानी का बॉटल है, आई एम ओपनिंग इट, ये टॉर्क है. टॉर्क मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स. समझ रहे हैं? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स. मान लो मेरे पास एक बुक है, ये मेरा एक बुक है, अगर मैंने इसको ऐसे घुमाया, दैट मीन्स टॉर्क लगा. एक पुश किया एक तरफ से पुल किया, दिस इज कॉल्ड टॉर्क. गॉट इट? आप सुबह उठकर टैप को खोलते हैं, क्या लगा रहे हैं? टॉर्क. फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. डिस्टेंस होना चाहिए टैप में, अगर डिस्टेंस नहीं है तो हम लोग भाई टॉर्क लगा ही नहीं सकते. सुबह सुबह तुम क्या कर रहे हो? वर्क. सुबह सुबह तुम क्या कर रहे हो? वर्क, घुमा रहे हो कुछ. सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? टॉर्क. नहीं सोनम, impulse is force into time, not force into distance. Force into time. Got it? Yes, Krisha. Anywhere where there is rotational motion ना, वहाँ torque लग रहा है. Anywhere where there is rotational motion ना,
वहां टॉर्क लग रहा है. Got it? Rachel, work Newton into meter is joule. Newton into meter, Rachel, is joule. Newton into meter is always joule. Not necessary, Prathamesh, but we normally write I. We normally write. I would like you to keep that practice. Is that clear? Sonam, impulse का symbol होता है J. Impulse का symbol होता है J. So I hope this is clear to everybody. Okay, let me see how many were listening. Suppose I ask you power. Power क्या होता है? Power is work done upon time. In other words, what is work done? Joule per second. So let's look at joule. Just now we did joule. Joule का क्या है? M1 L2. So I will write here M1 L2 T minus 2 I0 upon second मतलब T1. अब ये 1 को ऊपर लेके जाना है तो क्या बनेगा आपका? ये 1 को ऊपर लेके जाना है. अगर आप 1 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा? M1 L2 ये क्या होगा? T minus 3 I of 0. Got it? -3 होगा ना कल. -2 -1. -2 -1 ऊपर लेके जाना है तो -3 हो जाएगा. So this is the unit of power. Sorry, dimension of power. So this needs a lot of practice, but I have given you some formulas for you to remember. Amit, I don't know what you asked because there were so many chats. Can you copy paste? Yes, Amit. Yes, yes. I will be explaining it. It will not come for tomorrow. So you don't have to worry. Amit Dodia. Because हमने सिर्फ अभी initialize किया. अभिनव पूरा हम करेंगे next lecture में. पूरा list. ये आप थोड़ा सा पढ़ लो. जितना आज करवाया है उतना पढ़ लो आज. ठीक है. हमने आज जितने यूनिट्स किए हैं उतना तो पढ़ लो. रेस्ट आई थिंक यू कैन आंसर द पेपर. एज आई सेड इट इज नॉट नेसेसरी क्योंकि आप लेट बैच है. सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू विल बी एबल टू आंसर. जितना होता है उतना आंसर करो. ठीक है. विथ ऑप्शन है. बिकॉज दिस विल टेक मोर टाइम. 5 मिनट में थोड़े ना पूरे 147 डायमेंशंस होंगे. या सो अभिनव वो प्रैक्टिस से ही आता है बेटा. इट्स नॉट यू ओनली. किसी को भी नहीं आता है तो आपको कुछ टेंशन लेना नहीं है. ठीक है. So I think that's it from me today, and I am sure that you will be able to manage tomorrow. So thank you.